Pseudo force, hypothetical force, imaginary force. What is pseudo force? Let's see. We have seen lift based questions. If you place a block of mass m inside a lift which is going up with an acceleration of a, then when you draw this free body diagram, free body diagram of m, we used to do this downward force mg. This is the contact surface, and normal reaction always acts perpendicular to the contact surface and towards the body. This is n. Block is inside the lift, and therefore along with the lift this block is also moving up with same acceleration a. If I ask you to write F equals to ma, then you would do this n minus mg equals to ma, which gives us n as n times g plus a, which is perfectly correct. Normal reaction is coming n times g plus a. But now consider this situation. Let's say we have an observer who is standing inside the lift. Let's call him observer B. There was an observer who was standing on the ground. Let's call him observer A, and this is observer B. This equation is written for this observer A. What he says, that this block M is going up, and therefore when he uses F equals to ma, where F is total force, he says that net force is N minus mg, which is equal to what? Mass into acceleration. But if you ask observer B, let's modify this. Let's say free body diagram of M for observer A. This is the free body diagram for this observer A, and observer A, remember, is the ground observer. This is ground, and therefore he is what? Ground observer. Now, free body diagram of M for observer B. For him, observer who is inside the lift. If you ask him, he will also do the same thing. Mass M, downward force is what? mg. This is the contact surface, normal reaction force. It's going to act perpendicular to the contact surface and towards the body, N. These are the two forces which he sees on this object. And now if you ask him, what is the acceleration of M?
then he will not say that acceleration is a. Since he is present inside the lift along with this mass m, he finds that this m is at rest. अगर आप लिफ्ट में खड़े हुए हैं और आपका फ्रेंड आपके सामने खड़ा हुआ है तो वो आपको मूव होते हुए थोड़ी दिखेगा, वो दिखेगा आपको कि आपके सामने खड़ा हुआ है. एंड देयरफॉर इस ऑब्जर्वर को ये जो आदमी है ये किस पर दिखाई दे रहा है? रेस्ट. नाउ व्हेन यू आस्क हिम टू यूज F equals to ma, he says that net force is what? N minus mg mass into, but for him acceleration of mass m is what? 0, and therefore he gets value of n as what? mg. For ground observer, n is what? m times g plus a. For observer B, n is coming what? mg. या तो ये सही है या फिर ये सही है. Now I'll ask you to use your logic. जब भी आप लिफ्ट में खड़े हुए हैं, आपने फील किया है कि जैसे ही लिफ्ट ऊपर जाना शुरू करती है आपको अपने पैरों पर ज्यादा फोर्स फील होता है, which means result obtained by ground observer, it matches your daily life experience, and therefore this calculation is correct. Calculations done by this observer B, what he finds that normal reaction is same as if when lift was at rest, was not moving at all. If lift is not moving, then normal reaction is what? mg. If lift is going up, even then normal reaction is mg. If you ask him, but you know that it doesn't happen. As you go up, normal reaction increases. आपने फील किया हुआ है इस चीज को, and therefore you immediately say that this n equals to mg is wrong. गड़बड़ क्या हुई? इस आदमी ने जो फोर्स देखे थे इसने सेकंड लॉ अप्लाई किया. जब सेकंड लॉ अप्लाई किया इसको नॉर्मल रिएक्शन मिली. गड़बड़ कहां हुई? दिस इज taught in this article of pseudo force. यहां से वहां तक क्या हो गया है? That will be explained with the help of what? Pseudo force. अब इस ऑब्जर्वर को नोटिस करो. This observer A is on ground. And ground, you know, is considered at what? Rest. But this observer, along with the lift, is going up with acceleration a. And therefore, in physics, we have a special name for this observer B. Observer B is called NIO. What is NIO? NIO is non-inertial observer. Who is observer A? Observer A is IO. That is inertial observer. Now, who is an inertial observer? An observer who is at rest is called what?
inertial observer. Who is non-inertial observer? An observer who is moving with some acceleration a as seen by an inertial observer. अभी अपन स्टेटमेंट लिखेंगे, इससे नहीं पूछेंगे आप। अगर आपने ऑब्जर्वर बी से पूछा कि भाई तेरा एक्सेलरेशन क्या है, तो वो बोलेगा जीरो, क्योंकि आपको पता है रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट। हर ऑब्जर्वर अपने आप को रेस्ट पर फील करता है, and therefore you want to ask him what's your acceleration is. You will ask him. ग्राउंड बेस्ड ऑब्जर्वर, ग्राउंड बेस्ड ऑब्जर्वर से आपने पूछा कि भाई ये आदमी मूव कर रहा है या नहीं, इसके पास एक्सेलरेशन है या नहीं। उसने बोला हाँ। अगर इसके पास एक्सेलरेशन है, then he becomes what? Non-inertial observer. अगर ये नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर बन गया तो क्या हो गया? वो ये गया कि अगर ये नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर है तो फिर ये न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन यूज नहीं कर सकता। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन केवल वो आदमी यूज कर सकता है जो क्या हो? इनर्शियल ऑब्जर्वर। राइट डाउन दीज थिंग्स इन द फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट। First, write down inertial observer. An observer having zero acceleration, an observer having zero acceleration is called an inertial observer. Newton's laws of motion can be used. Newton's laws of motion can be used only by an inertial observer. And therefore, equation number 1 is correct. And therefore, equation number 1 is correct. Write down non-inertial observer. An observer moving with some acceleration, an observer moving with some acceleration as seen by an inertial observer is called non-inertial observer. अभी थोड़ी देर में आप फील भी कर पाओगे इसको, नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर की थीम को। An observer moving with some acceleration as seen by an inertial observer is called a non-inertial observer. Newton's laws of motion cannot be used by a non-inertial observer. Cannot be used by a non-inertial observer, and therefore equation number 2 is wrong. And therefore equation number 2 is wrong. मेरे दिमाग में आपने क्या फिट कर लेना है अब? F equals to ma, ये जो अपना सेकेंड लॉ था, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, all these laws they can be used by an observer who is an inertial observer, an observer whose acceleration is what? Zero. Whereas
if you are a non-inertial observer, if you have got some acceleration, but before that, ask an inertial observer. Ask an inertial observer. If you are inside the lift, call your friend. भाई लिफ्ट चल रही है या नहीं चल रही है. हालांकि आप फील कर लेते हैं कि लिफ्ट चल रही है या नहीं चल रही है, but then still, if you are a non-inertial observer, then remember you cannot use F equals to ma or first law, second law and third law. अब इस ऑब्जर्वर बी ने ये डिमांड की कि नहीं भाई, मैं भी न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन यूज करना चाहता हूं. मेरे साथ ये जो गड़बड़ हो रही है, कुछ करो कि ये गड़बड़ खत्म हो जाए. मुझको भी न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन यूज करने हैं. तो हमने बोला ठीक है, तुम न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन यूज करना चाहते हो, तो लेट्स इंट्रोड्यूस समथिंग which will make you fit for these equations. And that something which we are going to introduce is a force which doesn't exist and therefore is called pseudo force. It doesn't really exist. It is being used just so that this non-inertial observer can use Newton's laws of motion. Now write down the next line. To convert a non-inertial observer into an inertial observer, to convert a non-inertial observer into an inertial observer, concept of pseudo force is used. Concept of pseudo force is used. Now, how do we use that? What is the magnitude of pseudo force? What is the direction of pseudo force? Let's write down these things. Magnitude of pseudo force applied by the non-inertial observer, magnitude of pseudo force applied by the non-inertial observer is equal to mass of the object multiplied by acceleration of non-inertial observer. Acceleration of non-inertial observer as seen by an inertial observer. As seen by an inertial observer. And direction of pseudo force is opposite to the direction of this acceleration. And direction of pseudo force is opposite to the direction of this acceleration. क्या फायदा होने वाला है देखना यहां पर. Now let's draw modified free body diagram. Modified free body diagram of M for observer B.
इस बार हमने ऑब्जर्वर बी को नॉन इनर्शियल से इनर्शियल ऑब्जर्वर में कन्वर्ट कर लिया है, फ्रॉम नॉन इनर्शियल टू इनर्शियल. देन व्हाट वी डिड, हमने बोला कि भाई फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करो. उसने फ्री बॉडी डायग्राम में क्या क्या चीजें ड्रॉ की. डाउनवर्ड फोर्स mg, नॉर्मल रिएक्शन अप, ये फोर्सेस तो लग रहे हैं. डाउनवर्ड mg अप, नॉर्मल रिएक्शन. अपार्ट फ्रॉम दीज हमने इससे बोला कि भाई तुमको नॉन इनर्शियल से इनर्शियल में कन्वर्ट कर दिया है, तो एक इमेजिनरी फोर्स सूडो फोर्स तुमको अप्लाई करना है. कहां अप्लाई करना है? जिस तरफ तुम्हारा एक्सेलरेशन है उसके ऑपोजिट. ठीक, उसके ऑपोजिट मतलब लाइक दिस. Acceleration is up, and therefore pseudo force, the pseudo force should act what? Downwards. And what is the magnitude of this pseudo force? What is the magnitude of the pseudo force? Mass of the object multiplied by acceleration of this observer. इस ऑब्जर्वर का एक्सेलरेशन कितना है? a, and therefore the pseudo force is coming m multiplied by a. This is the pseudo force. रियलिटी में यहां पर कोई पुश नहीं कर रहा है, but just to convert this non-inertial into inertial, we are using this hypothetical force, which is called pseudo force. एक बार ये pseudo force लगा दिया तो ये क्या बन चुका है? इनर्शियल. अब ये क्या कर सकता है? न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन यूज कर सकता है. हमने बोला ठीक, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन यूज कर सकते हो. व्हाट इज न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन? F इक्वल्स टू व्हाट? ma. इससे पूछा गया कि भाई इस m पर क्या क्या फोर्सेस लग रहे हैं. इसने क्या बोला? mg n m डाउनवर्ड सूडो फोर्स. फिर आपने इससे पूछा, केयरफुली सुनना, आपने इससे पूछा कि भाई इस m का एक्सेलरेशन क्या है. किससे पूछा है? इससे. क्यों पूछा है? क्योंकि फ्री बॉडी डायग्राम कौन ड्रॉ कर रहा है? ऑब्जर्वर बी. इस आदमी से इसका एक्सेलरेशन पूछोगे तो ये अभी भी क्या बोलेगा कि भाई स्मॉल m तो अभी भी किस पर है? रेस्ट पर. आपने केवल एक एडिशनल फोर्स अप्लाई करवा दिया है, बट बॉडी इज स्टिल एट रेस्ट. नाउ if I asked you to use F equals to ma and body is at rest, that means acceleration is what? Zero. If acceleration is zero, that means आपका total force क्या आने वाला है? Zero. Rest. Total force क्या आने वाला है? Zero. इस बॉडी पर total force zero करने के लिए क्या करना होगा? What is the upward force? N. This N should exactly balance what? Mg plus ma. Mg plus ma. Once you say that N is equal to mg plus ma, this body is at rest. It has no acceleration. और कहानी सॉल्व भी हो गई. जैसे ही आपने इस सूडो फोर्स को यूज किया, नॉर्मल रिएक्शन ऑब्टेन बाय ऑब्जर्वर बी is coming what? mg plus ma, which is equal to what? This. That means just by introducing this pseudo force, we have corrected
everything about observer B. अब आप ये बोलोगे कि इस ऑब्जर्वर बी के साथ इतना सब क्यों किया, नॉन इनर्शियल था, भले रहने देते, हम इसी आदमी से बात करते रहते। इस चीज को समझने के लिए अपने दिमाग में कुछ चीजों को फिट करो। अगर सिस्टम मूव करता है, जितना ज्यादा उसके अंदर मूवमेंट होगा, जितना डिफरेंट पार्ट्स के अंदर मूवमेंट होगा, उतना ग्राउंड ऑब्जर्वर के लिए चीजों को विजुलाइज करना क्या हो जाता है, डिफिकल्ट। अगर आप ऑब्जर्वर को चेंज कर दो, तो ऑब्जर्वर चेंज करने से अगर आप सिस्टम के अंदर जो डिफरेंट टाइप के मोशन है उनको रेस्ट्रिक्ट अगर कर सकते हो, तो चीजें विजुलाइज करना इजी हो जाता है। और अगर आपने विजुलाइजेशन इजी कर लिया, तो फिर क्वेश्चन सॉल्व करना बच्चों का खेल है। किस तरह से बच्चों का खेल है, उसका एक छोटा सा एग्जांपल देखना यहां पर। कंसीडर अ सिचुएशन लाइक दिस। Consider a situation like this. This will tell you why did we introduce this concept of pseudo force and all. This is the lift. Inside the lift, we have an inclined surface which is making an angle of theta. Lift, and inside the lift we have an inclined surface. And on top of this inclined surface, we have an object of mass m. Length of this incline from this point to this point, length of the incline is what? L. The whole setup is inside the lift, and lift is going up with what acceleration? A. At t0, at t equals to 0, you found that system is in this situation. Small m is at the top of the incline, lift is going up with acceleration A. Now, question is that after what time this small m will be at the bottom of the incline? Write down this as a question. A block of mass m is placed inside the lift. A block of mass m is placed inside a lift on an inclined plane. On an inclined plane of length L, as shown in the figure. As shown in the figure. Find out after what time this object, find out after what time this object will reach bottom of the incline. After what time this object will reach bottom of the incline. अब अगर आप ग्राउंड ऑब्जर्वर से बात करते, तो ग्राउंड ऑब्जर्वर क्या बोलने वाला था? स्मॉल m, डाउनवर्ड फोर्स mg, normal reaction like this. This angle is what? Theta. This is free body diagram for observer A. A, दिमाग में रखना, A is what? Ground.
ऑब्जर्वर। ग्राउंड ऑब्जर्वर ने क्या बोला कि भाई एक तो डाउनवर्ड फोर्स एम जी है और एक क्या लग रहा है एम। नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन कहां लगती है? नॉर्मल टू द कॉन्टैक्ट सरफेस टुवर्ड्स बॉडी। अब इतना करने के बाद कुछ लोग क्या करने की कोशिश करते हैं, जिस तरह से हमने इंक्लाइन प्लेन एंड ऑल के अंदर चीजों को किया हुआ है, एम जी दे go for components of mg. This component of mg is mg sine theta. Nothing is wrong, which everything is correct. This is mg sine theta. mg का ये जो component है, this component is mg cos theta. जिस तरह की चीजें हम लोगों ने inclined plane के अंदर की हुई हैं. Along the plane mg sine theta, in this direction mg cos theta, and then they go for what? सर ऑब्जेक्ट कितना मूव कर रहा है? L. डाउनवर्ड एक्सेलरेशन क्या है सर इसका? सर इसका डाउनवर्ड एक्सेलरेशन है g sin theta. Because of this, जैसे ही डाउनवर्ड एक्सेलरेशन मिला, they go for s equals to ut plus half at square. s l यहां से यहां तक u0 acceleration they calculate as g sin theta t square, and they say that that's how we can calculate what time. But this is wrong. इस स्टेज पर पॉज करके सोचना कि क्या गड़बड़ हो गई है वहां पर। फोर्स डायग्राम में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये फ्री बॉडी डायग्राम किसने ड्रॉ किया हुआ है? ऑब्जर्वर ए। कौन है ऑब्जर्वर ए? ग्राउंड ऑब्जर्वर। ग्राउंड ऑब्जर्वर को केवल दो फोर्स दिख रहे हैं, एम जी, नॉर्मल रिएक्शन। इस एम जी का अलोंग द इंक्लाइन कंपोनेंट क्या आता है? एम जी साइन। इस डायरेक्शन में एन लग रहा है, इस डायरेक्शन का एम जी का कंपोनेंट क्या आता है? एम जी कॉस। डाउन द प्लेन एक्सेलरेशन क्या होगा? फोर्स mg sin theta divided by mass, that gives you acceleration as what? g sin theta. ये और ये अलग है, इसे का मतलब है डाउन द प्लेन एक्सेलरेशन, केवल समझाने के लिए था। बट प्रॉब्लम क्या हो गई है, ग्राउंड ऑब्जर्वर को ये ऑब्जेक्ट इस तरफ चलते हुए दिखेगा ही नहीं। क्यों नहीं दिखेगा? यहां देखना। अगर इस फिगर को आप टाइम t पर ड्रॉ करेंगे, let's say this setup is at t equals to 0, and after some time what happened? Something like this. At time t, what you found is this. Small m has reached bottom of the incline. यहां से यहां आ गया, यहां से यहां आ गया। इसका मतलब इस m का डिस्प्लेसमेंट ये है। This is displacement of m with respect to observer A. जो आदमी ग्राउंड पर खड़ा था उसको क्या दिखा? स्मॉल m यहां से यहां पहुंच गया है। What is this length? पता नहीं, आपने क्या ले लिया है? L, and therefore this whole thing went wrong. होपफुली समझ में आ गया होगा। ग्राउंड ऑब्जर्वर ने जब इसके अंदर चीजों को हैंडल करने की शुरुआत की तो फोर्स डायग्राम सही बना लिया था, लेकिन वो यहां पर चोट खा गया। हमने बोला एक काम करते हैं, हमने इस
लिफ्ट को फिर से ड्रॉ किया, दिस इज थीटा, यहां रखा हुआ है हमारा ब्लॉक ऑफ मास m, lift is going up with acceleration a. Now look here, इस लिफ्ट के अंदर एक आदमी खड़ा हुआ है, कौन है ये आदमी? ऑब्जर्वर बी। ऑब्जर्वर बी, इस आदमी से अगर आप पूछेंगे कि भाई ये स्मॉल m जब यहां से स्लिप होकर यहां पहुंचेगा तब कितना डिस्प्लेसमेंट होगा, तो उसका आंसर हमेशा क्या आने वाला है? L. Displacement of m with respect to observer B is what? L. इस आदमी को जो लिफ्ट के अंदर खड़ा हुआ है, लिफ्ट किस पर दिखाई देने वाली है? रेस्ट पर। आप लिफ्ट के अंदर खड़े हुए हैं, आपको एक इंक्लाइन दिख रहा है, आपने देखा इंक्लाइन के टॉप से इंक्लाइन के बॉटम तक ऑब्जेक्ट चला गया। आप लिफ्ट के अंदर हो, एज एन ऑब्जर्वर आपके लिए लिफ्ट रेस्ट पर है, आपको केवल ब्लॉक दिख रहा है ऊपर से नीचे आते हुए, एंड देयरफॉर यू से दैट डिस्प्लेसमेंट ऑफ m विद रेस्पेक्ट टू b इज व्हाट? L. लेकिन यहां क्या गड़बड़ हो गई थी? यहां आपने डिस्प्लेसमेंट ऑफ m विद रेस्पेक्ट टू a क्या लिया था? L, विच इज रॉन्ग। क्यों गलत है? क्योंकि मैंने आपको बताया दिस थिंग इज बेसिकली व्हाट? डिस्प्लेसमेंट ऑफ m विद रेस्पेक्ट टू a। होपफुली समझ में आ गया होगा क्रिटिकल पॉइंट कि क्या गड़बड़ हो गई थी, प्लस क्या एडवांटेज है इस आदमी से बात करने की। ये लिफ्ट कहां से कहां जा रही है हमें मतलब नहीं, कहीं जाए इस आदमी से पूछोगे तो ये बोलेगा केवल डिस्प्लेसमेंट कितना है, whatever is the length of the incline, and that length is what? L. Then हमने बोला भाई तुमने डिस्प्लेसमेंट तो निकाल दिया, अब एक काम करो फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करो। तो फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करने के लिए हमने इस पर नीचे क्या क्या फोर्सेस लग रहे हैं? mg, ग्रेविटी, कांटेक्ट सरफेस से 90 पर क्या लग रहा है? n। लेकिन ये ऑब्जर्वर भी किसके अंदर है? लिफ्ट के पास क्या है? एक्सेलरेशन। इसलिए ये ऑब्जर्वर भी क्या बना हुआ है? नॉन इनर्शियल। अगर ये नॉन इनर्शियल है तो आप एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए F इक्वल्स टू ma यूज नहीं कर सकते। आपको इस नॉन इनर्शियल को किसमें कन्वर्ट करना होगा? इनर्शियल ऑब्जर्वर। किसकी हेल्प से? सूडो फोर्स। इस नॉन इनर्शियल को सूडो फोर्स यूज करके हम किसमें कन्वर्ट करेंगे? इनर्शियल। सूडो फोर्स किधर लगता है? इसका एक्सेलरेशन किधर है? अप। तो फिर सूडो फोर्स कहां लगेगा? डाउन। ये लगा सूडो फोर्स डाउनवर्ड्स। दिस इज सूडो फोर्स। क्या होता है? मैग्नीट्यूड, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट multiplied by acceleration of this observer as seen by ground observer। ग्राउंड वाले आदमी को इसका एक्सेलरेशन क्या दिखाई दे रहा है? लिफ्ट के साथ a, m into a। जैसे ही ये सूडो फोर्स लगा, अब ये आदमी क्या बन चुका है? इनर्शियल। और अगर ये इनर्शियल बन चुका है तो ये क्या कर सकता है? यहां देखना, जो सूडो फोर्स का एडवांटेज है वो हल्का फुल्का क्लियर होना शुरू हो गया होगा।
अगर किसी को चीज इतनी अच्छे तरह से अभी क्लियर नहीं हुई है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। एक बार फिर से इस पूरे पार्ट को देखना। कई बार ऐसा होता है कि कोई नई चीज एक फर्स्ट अटेम्प्ट में दिमाग के अंदर नहीं जाती। बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, आएगा। जब आप एग्जाम्पल्स करोगे धीरे 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 चीजें दिमाग के अंदर आना फिट होती हैं। जैसे अभी क्या फिट करना है, स्मॉल एम, इस पर नीचे कितना फोर्स लग रहा है, एम जी प्लस एम जी प्लस दिस सूडो फोर्स, व्हाट इज दैट, एम ए। इसको और इसको दोनों को ग्रुप कर दिया। इस तरफ कितना फोर्स लग रहा है, एन। दिस एंगल इज व्हाट, थीटा। दिस एम is moving down in this direction with acceleration v. What is v? V is acceleration of m with respect to observer b. इस ऑब्जर्वर को ये स्मॉल एम इस तरफ मूव होते हुए दिख रहा है, इन दिस डायरेक्शन, विद व्हाट एक्सेलरेशन v, बिकॉज लिफ्ट इज एट रेस्ट। जैसे आपने बोला इस तरफ एक्सेलरेशन v है, तो एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए इस डायरेक्शन का फोर्स पता होना चाहिए। किस तरह से निकालेंगे? जब mg लगता है नीचे, then what is this component? mg sin theta. This is mg. What is this component? mg sin theta. What is this? mg plus ma, and therefore इस mg plus ma का इस डायरेक्शन का जो कंपोनेंट बनेगा वो क्या बनेगा? mg plus ma multiplied by sin theta. mg का mg sin, mg प्लस ma का mg प्लस ma sin थीटा। mg का इस तरफ का कंपोनेंट क्या था? mg cos। mg प्लस ma का इस डायरेक्शन का कंपोनेंट क्या होगा? mg प्लस ma इनटू cos ऑफ थीटा। नाउ ये जो इंक्लाइन वेज है, ये जो इंक्लाइन वेज है, ये इंक्लाइन वेज रेस्ट पर है, रेस्ट पर है। किसके लिए बात हो रही है? ये सारी कहानी किसके लिए ड्रॉ की गई है? ऑब्जर्वर बी। ऑब्जर्वर बी को ये इंक्लाइन वेज किस पर दिखाई दे रहा है? रेस्ट। अगर वेज रेस्ट पर दिख रहा है, स्मॉल एम कहां दिख रहा है? इस डायरेक्शन में मूव होते हुए। इफ यू रिमेंबर, रिजॉल्व करने के लिए एक्सिस सिस्टम लेने का तरीका क्या बताया था? बॉडी जहां मूव करेगी, वन ऑफ द एक्सिस शुड बी इन दैट डायरेक्शन, वही लिया हुआ है। द अदर एक्सिस शुड बी परपेंडिकुलर टू द फर्स्ट एक्सिस, एंड देन जो फोर्स एक्सिस के अलोंग नहीं है उनको रिजॉल्व करो। अब बॉडी कहां जा रही है? इस डायरेक्शन में। इस डायरेक्शन में अगर जाएगी तो n एंड mg प्लस ma cos, ये दोनों इस डायरेक्शन में क्या करेंगे? कुछ नहीं। किसी भी फोर्स का अपने से 90 पर कंट्रीब्यूशन क्या हो जाता है? 0। इन दोनों लोगों ने मना कर दिया कि भाई इधर कोई हमारा कंट्रीब्यूशन नहीं है। देन व्हाट इज द फोर्स लेफ्ट इन दिस डायरेक्शन? mg plus ma sin theta. And what is net force? Mass into acceleration. Mass into acceleration. क्या
ये आदमी क्या ये आदमी न्यूटन सेकंड लॉ अप्लाई कर सकता है? फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। यस, कर सकता है। क्यों? क्योंकि अब ये क्या है? इनर्शियल ऑब्जर्वर, सूडो फोर्स बनने की वजह से। जैसे ही आपने बोला ये इनर्शियल है, यू कैन सी कि अपने को b मिल चुका है। व्हाट्स वैल्यू ऑफ b कमिंग? g प्लस a sin थीटा, m कैंसिल, b मिल चुका है। व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ m फॉर ऑब्जर्वर b? l। किधर? इधर। इस डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट क्या है? l। इस डायरेक्शन का एक्सेलरेशन क्या है? b। And therefore, when you ask him to use this equation, s equals to ut plus half at square, he says that s is what? L, u is what? 0। स्टार्टिंग में स्मॉल m रेस्ट पर था, फिर स्लिप करते हुए नीचे आया। What is acceleration? b in what time? t। क्या ये यूज कर सकता है? बिल्कुल, ये यूज करेगा इस चीज को। एंड therefore t is coming root over 2l upon b। and what the value of b? 2l upon a plus g sin theta। a plus g sin theta, that's what t is। अब लास्ट पार्ट अपने दिमाग में फिट कर लो अच्छे से। क्या? अगर आप ग्राउंड ऑब्जर्वर से इस क्वेश्चन को हैंडल करने के लिए बोलते तो वो भी कर लेता। एंड इफ समबडी इज इंटरेस्टेड देन दैट इज होमवर्क फॉर यू। व्हाट you need to have? कंस्ट्रेंट रिलेशनशिप। पता है व्हाट इज कंस्ट्रेंट रिलेशनशिप? ये चीज यहां से यहां जा रही है। ग्राउंड ऑब्जर्वर अगर ये पता कर ले कितना है, कैसे करेगा? होमवर्क। अगर ये पता कर लेगा, इस डायरेक्शन का एक्सेलरेशन निकाल देगा, इस डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट निकाल देगा, तो वो भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकता है। लेकिन डिफिकल्टी लेवल ज्यादा है। जैसे ही आपने बोला कि भाई तू बता, इसने बोला कि सारी चीजें इजी हैं, मुझे दिख रहा है कि बॉडी केवल कितना चल रही है? एल। केवल एक प्रॉब्लम है कि mg और n के अलावा मुझे एक और फोर्स फील हो रहा है। आई सेड फील हो रहा है। मैंने आपसे बोला था कि मैं आपको फील करवाऊंगा, आप भी इस सूडो फोर्स को फील करते हो। कैसे? देखना। सपोज आप कार के अंदर हैं एंड कार एक्सेलरेट हुई। अगर कार एक्सेलरेट हुई तो आप पीछे की तरफ एक फोर्स फील करते हो। द मोमेंट somebody accelerates the car, you feel a backward push। कोई आदमी आपको पकड़कर पीछे की तरफ धक्का नहीं दे रहा है। ये जो बैकवर्ड फोर्स आप फील कर रहे हैं, आप कौन है? आप हैं कहां पर? इनसाइड द कार। अगर आप कार के अंदर हो तो फिर कैसे आदमी हो? नॉन इनर्शियल। इस नॉन इनर्शियल आदमी ने जब फोर्सेस को कैलकुलेट करने का सोचा तो उसे क्या फील हुआ? बैकवर्ड फोर्स, which is what? An imaginary force, which is what? A pseudo force। जैसे ही ये लिफ्ट ऊपर की तरफ जाती है, इस आदमी को, हमें, अगर हम लिफ्ट के अंदर हैं तो हमें एक डाउनवर्ड फोर्स फील होता है, और उसी फोर्स की वजह से हमारे पैरों पर, शूज पर हमें ज्यादा फोर्स फील होता है। तो जब भी आप नॉन इनर्शियल होते हैं, आपको ये इमेजिनरी फोर्स फील हो रहा होता है। जैसे ही इमेजिनरी फोर्स फील हो रहा है, फिजिक्स बोलती है कि अगर इस इमेजिनरी फोर्स की वैल्यू एंड ऑल डिफाइन कर दें तो इस आदमी के लिए कैलकुलेशन क्या हो जाती है? इजी हो जाती है। एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दैट यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ व्हाट? सूडो फोर्स। Put down everything।